and today I'm with my school buddy, chaddi buddy, bachpan ka buddy, Sumit. And first things first, he's a very, very amazingly beautiful human being from inside. बाहर से तो आप देख ही रहे हो जैसा ये दिख रहा है, but from inside. So welcome Sumit ji, welcome to the podcast ji. Thank you, and first of all, I would like to congratulate you. Thank you sir. Thank for your first book. Yes. मैं हमेशा ये सोच रहा था कि आप मजाक कर रहे हो Right. कि मैं बुक लिख रहा हूँ, Right. मेरे को बुक लिखनी है, Right. तो मुझे लगा था कि जज्बा बड़ा अच्छा है, बट उसको बात करके प्रेजेंट करना और लिख के प्रेजेंट करने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क। That's right. तो कंग्रेचुलेशंस। Thank you sir. और मैंने मजाक में नहीं लिखा था, मैंने जेन्युइनली लिखा था कि आई एम रियली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छी लिखी है विक्रम आपने। मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस आपसे थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी है, बट इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना। जी जी, मैं बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह ही ले रहा हूँ। हाँ, मतलब ये है कि मैं नहीं सोचता था कि दैट यू कुड most of us. So Sumit has seen my journey from the good old days, school days, college days, and my bad days, and then my struggles, and then my good days, and now my publishing days and podcasting days. So आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं वो नीची रहनी स्वाभाविक थी, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी ही रही हैं जीवन भर में। नहीं, मतलब इन जनरल मेरा मतलब था। मैं ये सोचता हूँ कि आपने बात करी कि I have seen your life as a spectator and also been a part of it to some extent. The real transformation happens only when we face real challenges. That's true. So I'm very happy that you face these challenges. I'm really happy, and I congratulate you, because I must have been a very deep-rooted karma, which you could overcome in this lifetime, which is very important. थोड़ा सा बुक के बारे में मैं बोलना चाहता था, क्योंकि that is what we are here for. You have started watching the Vikram Sethi podcast. Please don't forget to share this podcast with an addict or their families, and don't forget to hit the subscribe button. I hope you enjoy the show. शुरू करें जी। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सेठी, एंड यू हैव जस्ट जॉइंड अस ऑन दी विक्रम सेठी द क्विट ड्रग्स लाइक मी पॉडकास्ट, एंड इट इज़ इन रिलेशन टू द बुक दैट आई हैव जस्ट रिटन, जिसका नाम है क्विट ड्रग्स लाइक मी इंग्लिश वाली का, नशे छोड़ो मेरी तरह हिंदी वाली का, और हौसला रख नशे छड़ मेरे वांग पंजाबी वाले का। पंजाबी वाली अभी फ़िज़िकली प्रिंट होने के लिए पब्लिशर्स के पास है, और अमेज़ॉन पंजाबी प्रिंट नहीं करता है, इसलिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश को अभी प्रमोट कर रहे हैं। एंड टुडे आई एम विद माय स्कूल बडी, चड्डी बडी, बचपन का बडी, Sumit. And Sumit is first things first, he is a very, very amazingly beautiful human being from inside. बाहर से तो आप देख ही रहे हो जैसा ये दिख रहा है, but from inside he is a very staunch follower of nature and Buddhism, and Namme ho renge to you brother, and he was the one who introduced me to the philosophy of Buddhism, and which later expanded on me, and I did Vipassana and all those other things also which are related to Buddhism and related to Gautam Buddha. And Sumit ji is a very evolved human being, a very successful personality. He's been in the real estate sector for a while on the top posts, and all in all a beautiful human being. And today we are with Sumit ji to discuss about the book, the philosophy, and all the things related to the system. So welcome Sumit ji, welcome to the podcast ji. Thank you, and first of all I would like to congratulate you. Thank you sir. Thank for your first book. Yes. And I was very, very pleasantly delighted
When I saw the first draft, मैं हमेशा ये सोच रहा था कि आप मजाक कर रहे हो Right. कि मैं बुक लिख रहा हूँ, Right. मेरे को बुक लिखनी है, Right. I really want to write my experience of life, the transformation I have gone through, वो उस दुनिया तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे. Yeah. तो मुझे लगता कि जज्बा बड़ा अच्छा है, बट उसको बात करके प्रेजेंट करना जी. और लिख के प्रेजेंट करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. That's right. तो कंग्रेचुलेशंस. Thank you, sir. और मैंने मजाक में नहीं लिखा था, मैंने जेन्युइनली लिखा था कि आई एम रियली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड यू प्रॉमिस्ड मी कि बड़ी जल्दी वो नई बुक आएगी. Yes. तो बहुत ही अच्छी लिखी है विक्रम आपने. मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस आपसे थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी है. जी. बट इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना. जी, मैं बिल्कुल ठीक है कॉम्प्लीमेंट की तरह ही ले कि रहा हाँ, मतलब ये है कि मैं नहीं सोचता था कि दैट यू कुड, मोस्ट ऑफ अस कैन राइट सो वेल. I will say something. So Sumit has seen my journey from the good old days, school days, college days, and my bad days, and then my struggles, and then my good days, and now my publishing days and podcasting days. So आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं वो नीची रहनी स्वाभाविक थी, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी ही रही हैं जीवन भर में. नहीं, मतलब मैं इन जनरल मेरा मतलब था. Yeah, बट yeah. मैं ये सोचता हूँ कि आपने बात करी कि भाई आप सीन योर लाइफ एज अ स्पेक्टेटर एंड ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इट टू सम एक्सटेंट. तो मैं ये तो आपने निशन बुद्धिज़्म की भी बात करी थी. तो यस, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस अमेजिंग फिलॉसफी फॉर ऑलमोस्ट नाउ 10 years. तो you know, we always read, and what Sensei always says to us, and what Nishin has always written as, कि in life enjoy whatever is there to enjoy and suffer whatever is there to suffer. Yes. So there is nothing wrong in suffering. Yes. तो जो bad days हैं, they are in terms of secular world they are bad, but that is I think वहाँ पे ही हमारी असली learning Yes. और असली ट्रांसफॉर्मेशन जन्म ले सकती है. Yes. अदरवाइज इन अ रेगुलर लाइफ, इन अ नॉर्मल लाइफ, मोस्ट ऑफ अस वी जस्ट कीप लीडिंग इट, कीप sometimes enjoying it, sometimes suffer it, but the real transformation happens only when we face real challenges. That's true. So I'm very happy that you face these challenges. I'm really happy, and I congratulate you to face this entire journey of getting into that phase of being an addict, and then the beautiful journey of coming out of it. क्योंकि I must have been a very deep rooted karma, which you could overcome in this lifetime, which is very important. So थोड़ा सा बुक के बारे में मैं बोलना चाहता था. Please. क्योंकि That is what we are here for. मतलब I read it and it's a very easy read. तो चलो वो तो है ही. And I have seen that you have given a lot of credit to your family, which includes your wife Aman. Yes. Most of it. I have met her. She's an amazing person. I know her from the time when you, I think, met her for the first time. Yes, around that initial time. stages. Yes. And so I didn't know that she's such a personality, but for the last few years when I have started knowing her even better, तो yes, I can relate कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं उसमें वो she is capable of. Yes. And apart from that, she has a lot of things to her credit. कि she has been managing an NGO in terms of helping animals. I've seen that from my own eyes. Not only the financial contributions she has made in that sphere, but the amount of real efforts, the heart she has put in to help the animals. I think you also imbibed that. Yes. And She is my inspiration behind the social work that I do. Because a lot of times I've seen that you, during late nights, during the COVID times, Yes. you were going out, and when it was very difficult to even step out of the house, you took special permissions. You were feeding the dogs, you were feeding cattle. Yes.
तो बड़ी अच्छी बात है जी, मतलब इट इज़ नॉट दैट कि जो नहीं कर रहे वो गलत है, बट जो कर रहे हैं उसके लिए इट इज़ अ ह्यूज एफर्ट. It is. क्योंकि हम लोग उठ के कई बारी अपने घर में ही एक पानी का गिलास किसी को सर्व करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं. Yes, yes. या किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो तो थोड़ा टाइम लगा देते हैं. बट बाहर जाके लोगों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना हेल्प्स यू गेट लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड हेल्प्स यू बिकम अ बेटर पर्सन. तो कमिंग बैक टू कि जो आपने बुक लिखी है उसमें व्हाट आई फेल्ट इज़ कि द गुड पार्ट इज़ लंबी नहीं है. चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो बड़े इजी हैं. मेरे ऐसे आदमी के लिए भी समझना बड़ा इजी था, जो शायद टेक्निकल हो सकती थी बड़ी चीज़ें, बट द वे इट इज़ एक्सप्लेन्ड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. तो मतलब मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर है विच आई वुड लाइक टू मेंशन इन दिस डिस्कशन इज कि जो द डिसीजन विच यू टुक टू क्विट ड्रग्स, है ना. तो आई थिंक कि जो हेडिंग है उस चैप्टर की, द डिसीजन टू क्विट ड्रग्स, सो द डिसीजन टू आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं लाइफ में. तो जो द डिसीजन आई टुक, वहाँ पर आई थिंक आपकी जर्नी शुरू हो जाती है. जो डिसीजन आपने आई थिंक ये मेंशन भी किया अपने चैप्टर में कि आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ कि लेट्स टेक दैट डिसीजन. क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो, लिख देते हो उसको एक कागज़ के ऊपर, व्हेन यू राइट इट गेट्स इनग्रेव्ड इन योर माइंड. एंड आई थिंक उसके बाद तो फिर जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं कि आपको स्पेसिफिक NGOs मिली, स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ पीपल मिल, you got your support from your environment, which includes your family, your friends, your neighbors, your relatives. So I'm just saying that वो सब चीज़ें तो bound to happen है. But decision I think पहले लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो that is true for I think anything in life. And I believe कि as you know very rightly mentioned that the practice also helped you. The practice of the Lotus Sutra, which we also called as the Nichiren Daishonin's Buddhism, helped you, because I think the biggest thing, the foremost thing which the practice teaches us is to take action, right? So it starts from me and not from the other person. So when I start something, when I start to take some action, then the environment around me starts behaving in the same manner. And till the time I do not take action and I am completely dependent कि somebody else should come and support me, of course it happens. But then, as you have also mentioned in your book, that probably the relapse in addiction. So relapse in life, going back into the same situation also happens till the time I am not taking my own action. And that is normally what happens. People repeat their patterns again and again. Their patterns again. And ये सिर्फ एक ही situation की बात नहीं है. मतलब आपका focus मुझे पता है कि quit drugs पे है, which is one of the largest topics of the country today probably. Even the government is focusing big deal on it. और काफ़ी actions लिए जा रहे हैं. But मैं कहता हूँ कि ये किसी भी situation के लिए बहुत relevant है कि अगर आप खुद से जब तक दृढ़ निश्चय नहीं लेते, तब तक आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर नहीं जा पाते. ठीक है. तो दैट इज़ वाई आई लाइक माई फिलोसफीज, बिकॉज दे पुट एवरीथिंग ऑन यू ओनली. They don't say that somebody else from somewhere else is going to come and do something about it. So you are the person who's going to start. So the second thing which I relate a lot from what you have actually done and what you actually shared in your book is the so we are all bodhisattvas, we say. That who are practicing, we are all bodhisattvas of the earth. So bodhisattvas of the earth have this standalone spirit. So the standalone spirit of a bodhisattva for fulfilling their mission on this earth, I think you've really shown it by your own example in life, and I'm very sure that you will be able to lead others to it.
because you have done yourself. तो वो जो स्टैंड अलोन स्पिरिट से आपने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को इम्प्रूव किया या अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज ऑफ योर लाइफ. दैट्स समथिंग नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू, है ना. लाइफ में आपसे कोई भी कुछ भी आपने लिखा है उसके अंदर की प्रॉब्ली यू हैड सम मॉनेटरी लॉसेज, यू हैड सम health losses, you had some relationship losses. So, but ultimately you could gain everything back. Yes. Because you were very clear that I am going to do it. Yes. And when I am ready to take my own actions, understanding myself from within, understanding the life state which we all possess inside, and also at the same time respecting the life which is outside, that is respecting everybody else. You took those actions, and slowly, I think in your journey, lot of people joined you. Yes. Because of that. और अब आज की डेट में जैसे आपने NGO बनाया है, ये हमारा नौजवान मोर्चा, इसका नाम भी काफ़ी टाइम तक डिस्कस हुआ था. हाँ जी, है ना जी. आप भी काफ़ी टाइम तक डिस्कस करते रहे थे, आपने कई नाम जी चूज़ करे. Sumit was with me when I had formed the morcha, and मैं आपको वैसे सुमित जी के बारे में एक और बढ़िया सी बात बता देता हूँ कि पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, सुमित introduced me to the philosophy of Buddhism, first things first. Secondly, मतलब ये ही इज़ ऑलवेज बीन द गुड बॉय. बचपन से हम सब देख रहे हैं, तो मतलब आई वॉज द बैड बॉय, एवरीबडी नोज, बट ही वॉज द गुड बॉय, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ गुड बॉय. तो इन्होंने मतलब इनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, एंड इन्होंने उसके बाद आप अपने बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे आपकी. नहीं, बस यही है कि जो आपने नहीं, थोड़ा बताइए. जैसे आपने बताया, इंटरेस्टेड इन योर लाइफ आल्सो. माय लाइफ इज़ बीन वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल. कि शुरू से मतलब ये था कि दैट यू हैव टू स्टडी, देन यू हैव टू गेट इनटू अ प्रोफेशन, एंड देन यू हैव टू मेक मनी. Yes. And that's how the life is. And that's life. You did it all very successfully, and we are very proud of you. Yeah. I mean, I think everything happens very mechanically. If everybody wants to follow a straight line, it happens. तो हो जाता है. Yeah. But we all have our own karmas. Yeah. तो I've also had my own. So my journey, as Vikram said, has been very, 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 very plain vanilla kind of a journey, wherein all these things happen. But then, of late, I think as he said, good boy, so I probably was not so good boy. That I also had to face a lot of circumstances. Right. And that especially when, from the time I started my own company. So the intention was very neat. The process has been very, very correct legally. Yes. But unfortunately, everybody doesn't keep happy with you, and so certain things happened in a manner wherein the people who got rubbed off the wrong way from the way we were working for the benefit of certain people. So there were certain other people who got offended, and they filed criminal complaints. They filed all sorts of other cases, and they have actually now coming, if my own life is concerned, so whatever I started has been put on hold. So in the last 3 years, the whatever I could start has been put on hold. My even to the extent that they have tried that I should not be able to earn anything. My whole reputation gets jeopardized. But so in those times, my practices have really helped me, and I have been very regular. And so the real thing is that after that, I could receive protection despite all these odds. Those people are really influential, and they are influential in terms of relationships, network, money. So we understand, in how things work in the secular world. Yes. So, but then
practice helped me, my own karmas, I think I could face them courageously. And then after that, mystically, and trust me, I have no involvement into that, but mystically things turned in my favor in a manner that the people who were like behind my life, you can say, they got caught in a bigger mess. Yes. Right, and they were caught in the same mess which their own probably karmas had defined for them. Yes. And so they are going through that. I'm still sending my prayers for them also, that they are able to face those karmas bravely, and they are able to take the right action. And so many investors or clients who are stuck up because of the unethical management of those people, they are able to settle them, and settling them, they are able to get out of this mess themselves. So I really hope that happens. But the way you were saying that everything has not been very, very plain and simple. I think I have also I am also fighting my own karmas, and so then there are other things which have happened on the family front, and then on the health front, and then so this work front. But I think everything, I am so better prepared because of my practice. I'll फर्स्ट थिंग सर, आई होप कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो वो इस पॉडकास्ट को देखें, ताकि उनको आपकी फीलिंग पता चले, एंड नमे हो रहेंगे क्योर टू दैट. सेकंड, मैं आपसे जैसे बता रहा था, जैसे अभी आपने देखा ही है कि कितने सुलझे हुए इंसान हैं, तो इनकी गाइडेंस लेने के लिए मैं हमेशा से तत्पर रहता हूँ, जब से मैंने अपने जीवन में बदलाव शुरू किए हैं लाने के लिए. और जब ये हम लोग मोर्चा भी शुरू कर रहे थे, उस समय पे भी भैया की हमारे साथ गाइडेंस थी. इनका पीछे जो जिस तरह से हमें करना चाहिए, जिससे किसी को नुकसान ना हो और सबको फ़ायदा हो. मुझे बुद्धिज़्म से इंट्रोड्यूस किया, मोर्चा बनाया इन्होंने मेरे साथ. उसके बाद बहुत सारे लोगों की हमने हेल्प की है, ऑल्दो ये कभी सामने नहीं आते हैं, लेकिन जिन केसेस के साथ मैं स्ट्रगल करता हूँ, जैसे आज भी एक पिंजौर किसी केस के लिए जा रहा हूँ, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू गो विद मी देयर ऑल्सो सर. अच्छा, हाँ, तो ऑनलाइन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मना कीजिए तो माने आपकी बात. तो हमने इनको फंसा लिया साथ ले जाने के लिए, तो लेट्स गो देयर टुगेदर ऑल्सो. सो बहुत सारी चीज़ों में इनका मार्गदर्शन रहा है, और उस मार्गदर्शन की मदद से मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में सक्षम हो पाया हूँ. पार्टली बिकॉज ऑफ द बुद्धिज़्म प्रैक्टिस, पार्टली बिकॉज ऑफ जो इनकी जो स्ट्रगल करने की, हंसते हुए स्ट्रगल करने की जो वो है प्रतिभा है इनके अंदर. एक ये हंसते हंसते स्ट्रगल करते हैं, इनके चेहरे को देख के कोई बता ही नहीं सकता है कि कोई दिक्कत आ रही है इनके साथ. और मेरे ख्याल से यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि हंसते हंसते अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए और अपने कर्मा को खुद डिफाइन कीजिए. और यू नो, तो बहुत मतलब ये है कि कोशिश यही रहनी चाहिए जी कि जितना आप सहज स्वभाव से ज़िंदगी जी सकें. बिकॉज जब आपको यही पता चल गया, आपको यही समझा दिया गया है इन सो मेनी वर्ड्स कि एवरीथिंग विच यू आर फेसिंग टुडे इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट डीड्स, एंड वॉट एवर यू डू टुडे इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर. तो सब कुछ ही आपके ही हाथ में है ना, किसी और के हाथ में है नहीं. तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते. अब आप करते हैं तो that means that probably the life state is low. Then we are probably bound to create some bad causes again, and law of karma is always working. Or universal law है, जो I think you believe in that, because yes, before the practice also you believed in that. Yes. You used to discuss about कि कर्म की कितनी एक इम्पोर्टेंस है. तो कर्मों के बारे में आपको पता ही है कि that हम इस लाइफ टाइम में यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हैं, और कर्म भोगने के लिए भी आए हैं. तो भोगने में कभी भी कर्मों को फेस करने में हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. तकलीफ़ तो होगी, लेकिन उस टाइम पे ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि अच्छा हुआ कि ये मैं अब फेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इससे जीत के बाहर आऊँगा, है ना, और कुछ सीख के भी बाहर आऊँगा उसी टाइम पर. तो उसके लिए आई थिंक हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर तो दी सेंटर पॉइंट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा.
कि दैट इवन जो हम चांट करते हैं नम्मे हो रहेंगे क्यों, बेसिकली इट मीन्स दैट वी गिव आवर सेल्फ completely to the cause to the law of cause and effect. So to the law of cause and effect का मतलब ये है कि to the law of karma, है ना. तो ये चीज़ है. और बाकी आप बताइए आपका क्या विचार है इसके बारे में. आप भी कुछ बता रहे थे उस टाइम पे. जी. तो सुमित हैज़ ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन, स्पेशली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब से मैंने अपना दोबारा से अपने आप को संभालना शुरू किया है. इंट्रोड्यूसिंग मी टू बुद्धिज़्म एंड देन जो जैसे ये बात करते हैं आप जैसे देख पा रहे हैं, इनकी जो सूझबूझ है, जो इनकी जो मतलब सोचने की जो क्षमता है, जो IQ लेवल है, वो किसी और ही लेवल पर है. तो हमेशा से जब भी मुझे कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, मैंने हमेशा इनके साथ कन्फर किया है. हमने चैंटिंग की है एक साथ कई दफ़े, कई प्रॉब्लम्स को पार पाने के लिए एक साथ में. एंड जब ये मोर्चा शुरू किया था, नौजवान मोर्चा, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अकेले को समझ में नहीं आती थी कैसे करना है. तो ही रियली हेल्प मी अ लॉट. तो मतलब द शेयर इनकी जो हंस के प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता है, दैट इज़ ऑलवेज ब्लोन मी अवे, जिससे मैं हमेशा से इंस्पिरेशन लेते आया हूँ. और हंसते हंसते प्रॉब्लम्स फेस करने की जो मतलब कोशिश तो यही रहनी चाहिए जी कि जितना सहज स्वभाव से हम ज़िंदगी जी सकें जी. और उसमें हमें कमी किसी चीज़ की नहीं होती. राइट. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बगैर ज़्यादा परेशानी को महसूस किए या किसी के साथ गलत किए बगैर लाइफ जिएंगे तो हमें शायद हम कुछ कम पा सकेंगे. ऐसा बहुत ज़्यादा जो है लोगों को, हमें खुद को भी ऐसा समझ हमेशा से आई है कि इतना कंपटीशन है लाइफ में कि बस आगे बढ़ना है और किसी से भी आगे निकलने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. बट आई थिंक वो ऐसा कुछ नहीं है. आप सही रहिए, यू फॉलो द करेक्ट पाथ जिसको हम कहते हैं. तो अप्लाई द गाइडेंसेस which we learn from our practice and into your daily life. Imbibe the gonzon in your life, then you will be able to probably do much better in your life. Right. Even prosperity wise भी saha world है. We are here to make good life for ourselves, for our families, for everybody in our environment. तो हम तरक्की करने के लिए आए हैं, तो कोई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं. इनफैक्ट सेंसे ऑलवेज यूज्ड टू आस्क द मेंबर्स कि आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, आई होप यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ. व्हाई? बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच जो हम शाय ऑफ नहीं कर सकते. क्योंकि हमें ज़िंदगी जीनी है, हमें सब कुछ चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें बाहर भी जाना है, हमने घूमना भी है, हमने हॉलीडे भी लेनी है, हमने अच्छा खाना भी खाना है, अच्छे होटल में भी आना है, अच्छे कपड़े भी पहने. तो उसमें शर्म क्या है? कोई शर्म नहीं है. लेकिन उसको करने के लिए हम सही तरीके से भी वही चीज़ को कर सकते हैं. उसके लिए किसी कुछ गलत कर्म करके अपने आगे वाला टाइम गलत क्रिएट कर ले, उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है. और सो सेम गोज़ कि मुझे नहीं पता हमने पहले ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था, लेकिन आई फील दैट जब हमें ये पता है कम्प्लीटली दैट एवरीथिंग विच वी आर फेसिंग टुडे हैज़ बीन क्रिएटेड बाय आवर पास्ट कर्मास, राइट? सो देन वी नो दैट वी आर सो एम्पावर्ड कि हम आज की डेट में जो भी कुछ करते हैं वही हमारा आगे की लाइफ भी डिटर्मिन करेगा और हमारे आसपास वालों की भी. तो फिर इसका मतलब ये है कि हम किसी और को तो ब्लेम ही नहीं कर सकते. जी, है ना? सो दैट इज समथिंग विच लेमेंटिंग, रिग्रेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ब्लेमिंग एनीबडी एल्स इज नॉट रिक्वायर्ड. टेक कंप्लीट ओनर्स. दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू टेक द राइट एक्शन. Sure. So that I think comes out in your book also. Yes. That when you would have been, I mean, I have read that why you got, what led to your, getting into addiction. You mentioned that very clearly. Yes.
ठीक है, that was probably destined to happen. You had to face that. So some reason had to come up to bring you into that situation. Yes. But, and I'm sure that even in those times when you were going through this struggle of, addiction, how your days were going, how your nights were going, how your life was going, you must have so much to complain. Yeah. I'm sure that except you, everybody around you was a wrong person. हाँ, मेरे अलावा और सभी का कसूर था, मेरा कोई कसूर नहीं आपका कोई कसूर नहीं था. But how you, from that situation, while coming out of it, when you said I decided to quit drugs, and that golden line I keep on repeating in this discussion also, because that is something which people should keep there in their mind. It's the most important. It's the most important line of your book, that I decided. So then when you said I decided, then probably situation started changing, your own mindset started changing कि यार मैं हूँ, जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी वो भी मैंने करी थी, और जो इस सिचुएशन से निकलेगा वो भी मैं ही निकलूँगा. और जब आपने ये डिसाइड करा तो आई थिंक सारी दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई थी. मतलब आपकी जो दुनिया है ना, तो वो दैट आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी. हम ये डिसाइड कर लेते हैं यार मैं हूँ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैंने ही इसके अंदर से करना है, तो बस कोई भी आपको किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को सपोर्ट की या ब्लेम करने की. हाँ, मिलेगी आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है, हर जगह से मिलेगी आपको. कोई आपका आज की डेट में सपोज़ हम बहुत बड़ी ऐसे बैठे होते, मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ नॉर्मल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री वी ऑल लाइक टू ब्लेम कि फ़लानी गवर्नमेंट है, फ़लाना मिनिस्टर है, फ़लाना ये है, ये गलत है, ये वो है. बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली वांट टू गेट इनटू द ग्राइंड एंड टेक एक्शन? वो बड़ा कम है. तो बैठ के कमियां निकालना आई थिंक बड़ा नॉर्मल है. ये तो लोगों का फेवरेट टाइम पास है, चाय पीते हुए ये बातें करना. हाँ, मतलब ये हो जाता है, पर उससे सोल्यूशन नहीं निकल पाता. एट द सेम टाइम मैं बहुत बार यह सुनता था, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एक्सपीरियंस वेरी रिसेंट. मैं बहुत ये सुनता था कि सुमित जी, आपका ये जो काम है ना, ये जो फलाने दफ्तर के अंदर है, ये तो बॉस, ये तो हो नहीं सकता, ये आपकी जान पहचान होनी चाहिए और खूब सारे आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे. ये मैं आपको बता देता हूँ विक्रम जी, मैंने काफ़ी देर तक उस चीज़ को सुन के और मैंने बड़ा बोझ लिया अपने दिमाग पे. बट देन आई सैट डाउन, आई चांटेड, आई made my mindset again into a higher life state. I decided that I will get it done. I straight away went to that office. I met the senior most officer. He was so courteous. I mean, it was like complete change in my whole perception about that particular office. And my entire job happened probably very fast. And I'm telling you here, I didn't pay a single penny over and above whatever was the government fee. So I am just saying that, but the first person to take action is my own self, right? I can't keep sitting in my house, grumbling and feeling bad about the situation, and then complaining, and then not doing anything about it. Then things would not move. So similarly, हर सिचुएशन में ही हमें अगर किसी भी सिचुएशन से निकलना है तो पहला स्टेप तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा. तो ये है. और बाकी आपकी बुक के बारे में मैं यही फिर से कमिंग बैक की, जो मेरा पहला रिएक्शन था, जो मेरा फर्स्ट कमेंट था, आई थिंक मैंने ये जब आपने मेरे को बुक भेजी थी तो आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन अ शताब्दी. तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था. अच्छा. तो मैंने कहा कि मैं पढ़ ही लेता हूँ. मैंने पढ़ी तो बहुत सिंपल रीड है. इट्स अ वेरी स्मॉल बुक. इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल चैप्टर्स. मतलब 2-3 पेज के चैप्टर्स हैं और बड़े इजी है रीड करने के लिए. तो एक तो वो चीज़ है जो कि मतलब हेल्पफुल है, किसी रीडर के लिए हेल्पफुल है. जो दूसरी चीज़ है जो मैं मतलब पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ करी, although the subject of your book, or the title of your book says quit drugs like me, right? So it is very clear that it is about quitting drugs. But a person like me who has not myself gone into that situation, but
even after reading this book, I was so inspired that I could apply this book into my life. Right? So similarly, I would request people, of course, those who are going through this situation, वो तो immediately अपना copy लीजिए. The best part is it is a digital version. It is available digitally, and we all have our phones and laptops all the time. तो आप कभी भी इसको उठा के पढ़ सकते हैं. वो तो लीजिए. लेकिन even apart from that, people who are going through any situation, any challenge, any limitation in their life, who want to just break free from that, who want to gain freedom, who want to expand their lives, should pick up this book and read it. Because that was my comment to you when I reached home, and I think very late at night I had sent you a message that this is how it is so meaningful to me also. And probably again, I'll be waiting for the next book of yours, right? Because I'm sure that it will be very inspiring. Because you will be always, you will not be writing a fiction. Let me tell you. Let me tell the viewers also one thing. See, you remember the first edition, the first draft that I'd sent you? Yeah. It was almost 350 pages long. That was pretty long. Huh? So I'd written one whole book from my starting till now, which was really long, and somebody told me that you should make not one but 3 books out of it. So the first book is regarding my de-addiction, how I was able to come out of it. मैंने नशे छोड़े तो कैसे छोड़े, मेरा क्या तरीका था, द विक्रम सेठी मेथड बिहाइंड इट. तो उसके बारे में ये किताब बात करती है. द सेकेंड फेज़ ऑफ माई लाइफ वॉज जब मैंने नशे छोड़ने के बाद बाहर सक्सेसफुली उससे बाहर निकलने के बाद इन लाइफ ऑल्सो सक्सेस हासिल की. क्योंकि बीइंग लेबल्ड एज अ ड्रग एडिक्ट, इट्स नॉट वेरी इजी टू गो एंड डू बिजनेसेस एंड टू डू थिंग्स इन द वर्ल्ड बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट यू विद मनी. So the second book is about how I, earned my trust and respect back in the society. Yeah, that's very important point. In fact, as we have seen that the moment we start, so if we take the corrective action ourselves, then even during difficult times when we lose a lot of money, maybe we lose on a lot of relationships, we lose on our health, but if we are able to take the corrective action our own selves, then all these things come back to us, because we inside have changed ourselves. At that time also what happened, nobody was coming and snatching away money from us, nobody was coming and howling at us to spoil the relationships, nobody was coming and giving us wrong injections to spoil our health. Everything was being done by us. So when we decided to change, तो फिर वो सारी चीज़ें वापस से टर्न अराउंड हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी टर्न अराउंड होती है. आई एम श्योर कि आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी है और आपने इस चीज़ का मेंशन भी किया है बुक के अंदर. तो आई थिंक दिस बुक विल एडवाइज एवरीबडी टू विल गिव सो मच होप एंड encouragement and will show so big opportunity for everybody who's struggling through any of these situations in their lives. It's, of course, mainly talking about the addiction part, that you will be completely enthused to quit drugs, that you have so much to do in your life, so such a big life is waiting for you. You will be able to expand your life like huge. And become one with the universe, so that you are able to so whatever little you have lost, which looks so big today, you will feel that I can gain so many more times than whatever I have lost. So the first thing is you need to first gain your own self. So this is what I have understood, and I would request that everybody should just go and pick up the copy, and it's easy to pick up because it is easier on it's a digital form. So I'm very happy that you have taken this initiative of keeping it on a soft copy version, because most of the people today are very not everybody can, I mean the people who are voracious readers तो वो तो books carry करते हैं, लेकिन most of the people today are mobile carriers. है ना, तो वो अपनी बुक्स को अलग से कैरी करना थोड़ा सा वो becomes difficult, but mobile everybody is carrying, so
It is very easy for people to lay their hands and यस इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. सी दिस बुक इज़ प्राइमरीली फॉर द एडिक्ट्स एंड ऑल ऑफ अस नो कि एडिक्ट्स तो किताब पढ़ते नहीं हैं. वो किताब नहीं पढ़ते, वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं. तो फैमिली मेम्बर्स जी. तो लेकिन जो एडिक्ट्स हैं, फ़ोन सबके हाथ में है, इंस्टाग्राम सबके पास है. तो द थिंग दैट आई एम डूइंग नाउ इज मेकिंग एन ऑडियो बुक ऑफ द बुक, even better. so that people, you know, who don't want to read, who don't like to read, who don't have the time to read, you know, तो गाड़ी चलाते हुए, वैसे ही जाते हुए कहीं पे, वैसे बैठे हुए करते करते, तो मतलब वैसे तो बुक पढ़ना इज़ मोर एडवाइजेबल, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है द रिटन वर्ड, लेकिन जो देखने में और सुनने में आए उससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है. शुरुआत हो जाती है यस एटलीस्ट. बट अगेन पढ़िए ज़रूर. जी. बुक को पढ़ो ज़रूर आप. जी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज़ राइट डाउन दैट आई वॉन्ट टू क्विट. यस. And then whatever you want to quit. जैसे मैंने उसमें पहले चैप्टर में बताया है I've decided to quit. एक कागज़ पे लिखिए, अपने बटुए में रखिए उस कागज़ को, उस पर डेट डाल के, और वही आपकी एनिवर्सरी है जिस दिन आपने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला लिया था. हो भी जाता है. I think you have experienced and I have experienced in another manner. But whatever we write and determination, yes, it happens. Yes. Because the whole energy of this universe helps you achieving that. So it is something which sounds very miraculous, sounds very mystic, but when it happens so smoothly, and everything you are doing yourself. So it's a combination of many tools. It's called mindfulness. Yeah. So there's a whole chapter on mindfulness also in the book, the law of attraction, the cognitive behavioral therapy, which has actually really helped a lot of people, including me. And you know, many of the things that we do in Buddhism are actually CBT. Basically, it is the practice is basically the same, right? So the Lotus Sutra was written in the last 8 years of the preaching by the Shakyamuni, that is the Gautam Buddha. And when he wrote that 8 years and passed into extinction after that, so that those 8 years when he was preaching that Lotus Sutra, he said that all my earlier teachings will not be able to apply in the Saha world. Yes. Right? Because those teachings are all right, but when you are doing certain things, when you are in a world full of people, you have to stay in a society, when you have to earn your livelihood, you have to make good for yourself, then the teachings of Lotus Sutra will apply. So why you said that cognitive behavioral therapy is so relatable is because that is something which is completely in orientation with the Saha world, that is today's world, that is the secular world. Yes. That you have to stay in the society. You cannot go to Himalayas and completely cut yourself from the the people, because you have to stay in the people, and then you have to do all your activities there. Right. So that is, I think that is true, and probably that is why you found it so useful. Yes. So any last thoughts that you might like to share? I think my last thoughts, I just shared that please pick up this book. It has so one is, it is very useful for the people who are going through addiction, specifically the drug addiction. It is very useful for everybody, whoever is facing any sort of challenges or limitations in life. Once you will read this book, it gives you immense hope. I think hope is the biggest thing which you can, which a person at any moment of time needs, because when once one has hope, then other things follow. Right. So, and the third thing is that, as I said, that since Vikram has very intelligently put this book in a digital mode, so it becomes very, very easy for you to pick up. So please do that. And it is a very small, very well written, very easy reading book. Right. So I think a person who would like to start can maybe finish this book in 2 days, 3 days, even if somebody doesn't want to read too much. Because every day if you are able to read 3-4 chapters or 2-3 pages, you are able to finish this book. And the more important part is that please repeat your reading. Do not read this book only once, because it is about
applying these lines or these chapters or this book into your daily life, just reading it and feeling that you have the knowledge of this book is not sufficient. So applying the principle, it is all very application based book, right? So that is something which I would like to share, my closing thoughts. सो जैसे कि आपने देखा कितने सुलझे हुए तरीके से और बढ़िया तरीके से भैया बोलते हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता है. एंड आई रियली विश एंड होप कि आने वाले समय में आप भी लेखक बनेंगे. एंड अगर मुझसे इंस्पिरेशन लेके आप एक किताब ही लिख दें तो ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी. और एक दिन ऐसा है जिस दिन भैया मुझे पॉडकास्ट पे अपनी इनवाइट कर रहे हो रिगार्डिंग हिज बुक. तो नहीं, definitely it inspires me. अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया होगा. तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, द मिशन इज़ कि कोई एक इंसान अगर मुझसे इंस्पिरेशन लेके नशे छोड़ दे, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर ले और आज जो वो कर्म कर रहा है उसकी तरफ ध्यान दे, जिससे उसका कल सुधरे और कल बीते हुए कल के बारे में ना सोचे, उससे सिर्फ लेसन्स ले और आगे बढ़े. और किताब ख़रीदें, मिशन को ज्वाइन करें. जितना कुछ मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट ईजी, बट यू नो वंस यू डिसाइड टू डू इट्स रियली ईजी टू डू. मेरे लिए ईजी बन चुका है. जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, समय स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इससे इंस्पिरेशन लेकर के अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं. मुश्किल काम है लेकिन एक स्पार्क होता है, वो चलता है तो चल जाता है. तो अगर ये मोमेंट आपके लिए स्पार्क है वो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन योर जर्नी. तो आप हमसे जुड़े रहिए, किताब पढ़िए, आगे ऑडियो बुक आ रही है वो पढ़िए. उसके बाद और बहुत सारी वेबिनार्स आई एम स्टार्टिंग सून, तो वेबिनार ज्वाइन कीजिएगा, ऑडियो बुक सुनिएगा और भगवान करे कल को हम मूवीज़ बनाएं इसके ऊपर और लोग देखें और इंस्पिरेशन ले, तो एक अलग से मुहिम चालू हो. और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ. और आई थिंक जो आपके ये जो भी पढ़ रहा है एक बुक, तो वो आपको कोई उसके ऊपर अगर रिव्यू या कोई कमेंट दे सकता है तो वो दे, सो दैट आपको यू कैन शेयर दोज कमेंट्स विद अदर्स, सो दैट पीपल रियली फील कि दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बुक. बिकॉज सिर्फ बताने से नहीं, उसको देख के पढ़ के बहुत फ़र्क पड़ता है. So thank you, sir. Thank you for joining us on the podcast. And thank you everyone for viewing us, for taking out the time to watch this podcast. And अगली बारी किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ मैं आपके पास दोबारा से पहुंचूंगा अपनी बुक को और इस मिशन को प्रमोट करने के लिए. Thank you. Thank you for watching the full episode. Don't forget to subscribe us for more episodes like this one. See you the next time. Bye.